हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 के लिए कैलाश चंद्र मैगजीन की डिक्टेशंस चल रही हैं, जिसमें हमने वॉल्यूम 1 को कंप्लीट कर लिया है और अब हम वॉल्यूम 2 कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने वॉल्यूम 1 नहीं की है, तो पहले अपने वॉल्यूम 1 का बेस बनाइए, उसके बाद वॉल्यूम 2 करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर फ़ील होगा और ज़्यादा आउटपुट मिलने की संभावना है, ठीक है? तो आपको पता है कि यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम पे भी मेरा एक चैनल चल रहा है जिसमें हम रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते हैं टारगेट्स। मतलब फ्री गाइडेंस बैच चल रहा है, एक मेरा फ्री गाइडेंस बैच चल रहा है 2026 एग्जाम के लिए, जिसमें हम डेली बेसिस पे हमें क्या करना है वो चीज हम डिसाइड करते हैं, देन वो शेयर करके उसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बस प्रॉब्लम उसमें क्या आ रही है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है अकाउंटेबिलिटी की, क्योंकि आपका इंटरेक्शन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। उसी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं ऑल्टरनेट डेज पे एक क्लास रखूं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी ऑब्वियसली, जो एक क्लास रखूं जो कि आपकी इंस्टाग्राम पे होने वाली इंस्टाग्राम पे लाइव या फिर यूट्यूब पे ही लाइव होने वाली है, जो शाम को 5 बजे रखने की मैं कोशिश कर रहा हूं, जिसमें आप डिस्कस कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप इस बारी 2026 के एग्जाम में एक्सेल करें और बहुत अच्छे मार्क्स से सिलेक्ट हो, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी ट्रांसक्रिप्शन नंबर 25। जैसे कि हम पता है कि अभी हम 400 से 600 वर्ड्स पे जंप करें हैं। लास्ट हमने 400 वर्ड्स की प्रैक्टिस करी थी, आज हम नेक्स्ट 400 की वर्ड की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन हमारी प्रैक्टिस क्या होती है, जिसमें अब आज जो है हम 800 डिक्टेशन हमारी 800 वर्ड की होती है, लेकिन उसमें 400 वर्ड हमारे पुराने होते हैं और 400 वर्ड हमारे नए होते हैं। तो जिससे बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम भी ना देना पड़े, अभी जो कि हम एग्जाम में दे एग्जाम अभी सीबीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए हम ज्यादा टाइम भी ना दें, लेकिन आउटपुट हमें प्रॉपर मिले। इसीलिए आज ट्रांसक्रिप्शन नंबर 25 होगी, जिसमें हम 25 के 400 वर्ड्स जो कि पुराने हैं और बैक के 25 बैक के 400 वर्ड्स जो कि नए हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, तैयारी स्टार्ट होने वाली है। आवाज वगैरह सब क्लियर है? एक बार थम्स अप कर दीजिए। वॉइस एंड एवरीथिंग इज क्लियर, वॉइस एंड वीडियो। थम्स अप दीजिए जल्दी से सारे बच्चे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ट्रांसक्रिप्शन नंबर 25। 3, 2, 1, start. Mr. Vice Chairman, first of all, I must place on record my grateful thanks to the University Grants Commission for the work that they have done for the advancement of higher education. They have done good work and in full cooperation with the Education Ministry. This, I think, must encourage state governments to establish
University Grants Commission or communities in their respective states. What the country needs most is the coordinated efforts of the autonomous university grants commissions working in harmony with the state governments and university authorities. Coordinated efforts are needed to bring about certain uniformity in the standards of university education. Without that, our educational advancement is bound to suffer from various tensions and difficulties. I do agree with my friend that the annual report under the discussion is rather a dull report. At least, it is not as bright as the two previous reports were. In the previous two reports, the University Grants Commission invited the attention of the nation to a certain academic problems, to certain educational needs. Unfortunately, in this report, the University Grants Commission confines its remarks mostly to what has been achieved in the field of university education under the guidance and with the assistance of the University Grants Commission. However, sir, it is not possible for me to agree with Mr. Santhanam that the University Grants Commission should not extend help to universities for the preservation of manuscripts. Manuscripts are of great importance so far as university libraries are concerned. It is the duty of universities to preserve those manuscripts, and it is the duty of the University Grants Commission to extend to universities the necessary financial assistance for maintaining and preserving the manuscripts in good order. Also, it is not possible for me, sir, to agree with my friend that today universities are enjoying too much of autonomy. I agree with the University Grants Commission, which 2 years ago remarked that freedom is vital for education and democracy, and I personally feel, sir, that on one plea or the other, university autonomy and academic freedom are being restricted rather than being extended as they must be. I do not think, sir, that a social purpose or a social value can be imparted in the teaching by a teacher through the imposition of restrictions on his freedom of thinking. I feel that teachers need academic freedom for discharging their duties
in an efficient way. If we take into consideration the affiliated colleges, we will notice that the teachers are subjected to such humiliating conditions that it is not possible for them to discharge their duties on their students, to impart to their students any sense of responsibility or any moral values of their lives. I therefore, sir, feel that it is necessary to be more careful about the preservation of academic freedom to teachers. Sir, we are grateful to the Education Ministry and to the University Grants Commission for upgrading the salaries of teachers in the central universities. Yet, a great disparity prevails. The salaries of teachers of central universities and state universities and affiliated colleges, and this disparity is causing a lot of heart burning and a lot of difficulties. As one connected with education, I may say that there is not such a marked difference in the quality of teachers serving in the central universities and in the state universities and in affiliated colleges as to justify the great disparity in the salaries of teachers of these institutions. I feel, sir, that we must keep in our mind the remarks of the University Grants Commission made in their earlier annual report with regard to teachers' salaries. We are not only to provide adequate salaries to teachers of affiliated colleges but also to teachers of secondary schools. We must remember, sir, that a great majority of students study in affiliated colleges and the quality of education is largely determined by the quality of work that is done in affiliated colleges. For improvement in the quality of teaching, improvement in living conditions is also very necessary. The University Grants Commission has invited our attention to its report to the appalling conditions in which teachers have to live. But unfortunately, the University Grants Commission has to admit that it does not seem likely that we shall be able to make anything more than the marginal contribution towards this practical need. I feel that the University Grants Commission should pay more attention
to the solution of this problem than has so far been paid by it and the Education Ministry, and that the government should not grudge funds to the University Grants Commission for making adequate arrangements for improving living conditions of teachers who are expected to train the citizens of the country. Sir, in the University Grants Commission report, it is maintained that rupees 12,000 should be granted to every affiliated college for the welfare of the teaching staff, and that efforts should be made to provide them with quarters, and that too in the vicinity of the college where they teach. आई होप आप सबसे डिक्टेशन लिखी गई होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा ये डिक्टेशन बैच है, इसकी 2 राउंड्स होते हैं। पहला राउंड जो होता है, इसका फर्स्ट पार्ट जो होता है वो हम यूट्यूब पे लेते हैं लाइव क्लास, जिसमें डिक्टेशन होती है। देन इसका सेकंड पार्ट होता है जो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे जिसका लिंक शेयर करते हैं, जो कि एक गूगल मीट की लाइव क्लास होती है जिसमें आप रीड करते हैं इसको। जो भी इंपॉर्टेंट आउटलाइंस होती हैं उनको देखा जाता है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ से आप रीडिंग की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी रीडिंग स्किल को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम है उसका भी सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो इसी के साथ गुड मॉर्निंग, मिलते हैं बाद में। ओके बाय।